Namaste, Khush Raho Vidya. I am JVN Dr. Sunita Bhati, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology, Jyoti Vidyapeeth Women's University. I am teaching you .NET framework, and this paper belongs to DET 6th semester. In our last session, we have discussed about the if then else if statement, and we have developed a program for that. Okay, now in our today's session, I will discuss about the select case statement. That is just like a switch case statement in C. Okay, you have well known about the switch case statement. This is similar to the this select case statement in VB.NET is very much similar to the switch case statement, and this select statement in VB.NET, it is a branching statement in which we define various cases. What do you mean by various cases and branching statement? Actually, we can define different cases here, and whatever the condition you are applied with select case statement, that condition will be matched to one of the case value, and if it will match, then that case will be executed. The statements of that case will be executed. And if no condition will match, then no case will execute. At last, default case, that is case else, will be executed. So you can see here what is the use of this how we can use this select case statement. There is a syntax you can see here in the file. I have written here the syntax for select case statement. Select is keyword, single space. Case is also keyword, single space. We have to specify here either a variable or an expression. Okay, you can specify a variable or expression. या तो आप यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे या स्पेसिफाई करेंगे या कोई भी एक्सप्रेशन आप यहाँ लिखेंगे. Okay, and then after that we have to start cases. So case first, that is case is a keyword, single space, value 1. We have to specify here value 1 for case 1. Okay, now after that, in the next line we will write the programming statement. It may be a single statement or more than one statement. Okay, or multiple statement, you can say. Okay, so if this was the case 1, and then after that we will define case 2. Case keyword is used, single space. Here we have to given the value, and after that, in the next line we will give the statements, programming statements. Okay, so like similarly we can define so many cases, multiple cases here. Case 1, case 2, case 3, case 4, as you want, according to your program. And uh, at last we have to define case as, that is default statement, the default case. This is a default case. What is the meaning of default case? Actually, here you are giving variable or expression. This variable or expression value will be matched to case value. You have written here value 1, value 2 will be matched to any one of the case. Okay, if this variable or expression value will not match any one of the case, then in this condition, case as, that is default case, will be executed, and you can write here one or more statement, and this will be these statements will be executed when no case value will be matched. Then after that, the default case, that is case else, will be executed. And after case else and writing the statements in this, we have to end this select case statement using and single space select. Both are the keywords. Okay, so this is the syntax for select case statement. Now
we will take an example to understand what is the logic behind it. Okay, so we will create a program to check whether an entered alphabet is vowel or consonant. Okay, so first of all, we are doing Windows programming, so we will design a form. So there is a public class form. We are creating a class that is form 1, and this is a public class. Okay, in this class, we have created two handlers, first for check button and second for clear button. Okay, so in this check button, what we will do, I will discuss in our program. Actually, I will show you first of all output so you can easily uh, understand what is the logic behind it. Okay, uh, this is the example of select case statement where this is the form we have designed, and program for control structure, this is the title of this form. And here the example of select case statement is a label. Enter any alphabet from A to Z is also a label. There are two tables and two text boxes, and these are two command buttons. So what we will do now, we are I'm showing you in IDE. This program I will show you in IDE. So I'm starting the IDE, sharing again this IDE. Okay. Okay. So you can see the code here. Okay. First of all, I will run the program on clicking this build button. Processing is going on. It will take few seconds to run. Okay, so because processing is going on, you can see. Okay, so our this is our program. Actually, this is the output. This is the form we have designed. Enter any alphabet. It is asking from user, enter any alphabet from A to Z. This is the our first test box. Is this text box name is txtcare.text. Okay, we will enter our any alphabet between from A to Z. So you can enter any which you want. I'm entering, suppose K. Then I will click on check button. What is K? K is a consonant. K is consonant. Actually, we there are 5 vowels A, E, I, O, U, and apart from that, all these are consonant. Means A, E, I, O, U के अलावा जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं. तो यहाँ हमने के टाइप किया तो और चेक बटन पर क्लिक किया तो इसने शो कर दिया यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर. इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम है txt show.txt. इसके अंदर के इज कॉन्सोनेंट, ये वैल्यू प्रिंट होगी. अगेन आई एम राइटिंग के की जगह मैं लिखती हूँ यहाँ पे यू. देन आई विल क्लिक ऑन चेक बटन. यू इज वॉवल. ए ई आई ओ यू 5 वॉवल होते हैं ना, तो यू इज वॉवल. ओके, अगेन आई एम क्लिकिंग ऑन, आई एम प्रेसिंग जेड. जेड इज कॉन्सोनेंट, करेक्ट. आई एम प्रेसिंग ए एंड क्लिकिंग ऑन चेक. A is vowel. So ये प्रोग्राम आप इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि हम क्या चाह रहे हैं. यहाँ पे हम यहाँ पे A to Z कोई भी अल्फाबेट एंटर करेंगे उसको ये चेक करके बता रहा है. चेक बटन पर क्लिक करने पर ये शो कर रहा है कि वो वॉवल है या कॉन्सोनेंट है. तो हम यहाँ पे प्रोग्राम में आते हैं. अब मैं ये कोड आपको समझाती हूँ कि ये सेलेक्ट केस से हमने कैसे किया इस प्रोग्राम को. देखिए, ये जो चेक बटन हमने फॉर्म पर था, चेक बटन,
उसका हैंडलर यहाँ पे डिफाइन किया है। उस पर आप चेक बटन पर जब यहाँ पे फॉर्म डिजाइन किया था तो उस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये हैंडलर खुल जाएगा। ये मैं रोज आपको हमेशा बताती हूँ हैंडलर कैसे ओपन होता है, ठीक है। जब बटन पर डबल क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक ये हैंडलर खुल जाएगा। उस हैंडलर के अंदर कोड नहीं लिखा होगा, खाली ये हैंडलर खुलेगा, ये ब्लैंक होगा, इसमें ये कोड अपने को लिखना है। नाउ हम क्या करना चाह रहे हैं कि जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है फर्स्ट वाला जिसका नाम है txt ओके, उसकी वैल्यू को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं हमारे प्रोग्राम कोड के अंदर और एक वेरिएबल में डालना चाह रहे हैं। क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर देयर इज जो भी वैल्यू है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, उसको हमें कैरेक्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो सी कैर मेथड का हम यूज कर रहे हैं। सी कैर फंक्शन है हमारा, उसमें हम डाल रहे हैं txt टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू, जहाँ पे हमने ए जो हम अल्फाबेट्स एंटर कर रहे थे उस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को हम इस फंक्शन के अंदर डाल रहे हैं ताकि ये सी मतलब कन्वर्ट हो जाए कैरेक्टर फॉर्म में। और उस कैरेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको एक्स वेरिएबल के अंदर जो कि कैरेक्टर टाइप का है उसमें स्टोर कर रहे हैं। डिम एक्स एज इंटीजर, एक एक्स वेरिएबल ले रहे हैं कैरेक्टर टाइप का और उसमें ये वैल्यू जो टेक्स्ट बॉक्स की है उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करके एक्स में डाल रहे हैं। नाउ हमने अपनी वैल्यू को गेट कर लिया, फॉर्म के ऊपर जो टेक्स्ट बॉक्स हमने लिया था उस टेक्स्ट बॉक्स से गेट कर लिया है यानी ले लिया है, एक्स में स्टोर करा है। नाउ उस एक्स की वैल्यू को अब हम सिलेक्ट केस में डालेंगे और चेक कराएंगे डिफरेंट केसेस से। सिलेक्ट कीवर्ड है, केस सिलेक्ट केस स्टेटमेंट हम चला रहे हैं, लिख रहे हैं सिलेक्ट केस एंड वेरिएबल नेम दैट इज एक्स जिसमें कि कैरेक्टर है। नाउ हम केसेस डिफाइन करें। केस ए, अगर आपकी जो एक्स वेरिएबल उसके अंदर वैल्यू है ए, डबल कोटेशन में हम लिखेंगे ए, केस की वैल्यू हम लिख रहे हैं ए, अगर ये एक्स की वैल्यू और ये ए मैच हो जाता है, अगर आपने वहां पे एंटर ए किया है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, एक्स की वैल्यू दैट इज ए इज वोवेल, जो कि टेक्स्ट बॉक्स सेकंड वाला जो टेक्स्ट बॉक्स हमने लिया था tst show dot text उसमें शो हो जाएगा। उसमें हम असाइन कर रहे हैं, क्या असाइन कर रहे हैं, ये एक्स वेरिएबल की वैल्यू दैट इज जो भी आपने ए एंटर किया है तो यहाँ ए आ जाएगा। प्लस हम उसके साथ कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, मतलब जोड़ रहे हैं स्ट्रिंग को, इस स्ट्रिंग को इज वोवेल एंड ये एक्सक्लेमेशन साइन है तो ए इज वोवेल इस तरह से शो करेगा। अगेन केस ई हम चला रहे हैं, केस ई AEIOU हम पांचों वॉवेल्स यहाँ पे चेक कराएंगे। अगर इनमें से होगा तो वो जो लेटर है वो प्लस इज वॉवेल ऐसे प्रिंट हो जाएगा। अगर इनमें से कोई केस मैच नहीं होगा, एक्स की वैल्यू कोई भी इन AEIOU में से नहीं है, कोई अदर अल्फाबेट है, देन उस केस में केस एल्स जो कि हमारा डिफॉल्ट केस है वो एग्जीक्यूट होगा। और उसके अंदर हमने क्या डाला है, सेकंड टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इज कॉन्सोनेंट एक्स, जो भी एक्स होगा, जैसे सपोज आपने डाल दिया जेड इज कॉन्सोनेंट, ये जो पूरी स्ट्रिंग बनेगी इस तरीके से वो किसमें जा रही है, txt show dot txt टेक्स्ट बॉक्स में आ जाएगी इस कॉन्सेप्ट। मीन्स अगर आप AEIOU में से कोई डालते हैं तो इनमें से वो वैल्यू मैच हो जाएगी। एक्स के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो AEIOU में से कोई वैल्यू है, then it will be matched and that case will be executed. अगर if you are not entering any vowel, you are entering other than vowel, okay, means you are entering consonant, then उस केस में AEIOU से मैच नहीं होगा, कोई भी केस मैच नहीं होगा, उस केस में डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा और प्रिंट हो जाएगा कि जो भी लेटर आपने एंटर करा था इज कॉन्सोनेंट। एंड देन आफ्टर दैट ये जो हमारा डिफॉल्ट केस उसके बाद सेलेक्ट केस स्टेटमेंट को बंद करने के लिए, क्लोज करने के लिए एंड सेलेक्ट लिखना होता है एंड देन एंड सब। तो ये जो हमारा ये हैंडलर बनाया हमने चेक बटन के लिए, उसकी एंडिंग है एंड सब, और ये एंडिंग है एंड क्लास जो हमारी स्टार्टिंग में पब्लिक क्लास फॉर्म 1 स्टार्ट हुई थी उसकी एंडिंग है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोग्राम बनता है। सेलेक्ट केस स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर और आपको एग्जीक्यूट करके मैंने बता दिया किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस प्रोग्राम और related to select case statement, you can ask me on my WhatsApp number. Okay, this session is powered by digital version 2.0 JVWU Vidyapeeth University. Thank you.